हेलो एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट अगेन एज यूजुअल हमारे साथ बने हुए हैं गौतम वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू। सो गौतम आज तुम कैम्ब्रिज में हो राइट? हाँ, आपको जैसा कि इस टीवी स्क्रीन से दिख रहा है, इस पे तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज भी आ गया है। थोड़ी देर में चला जाएगा, बट पता नहीं कैसे आ गया है वो, बट हाँ। Brilliant. I remember until a few weeks ago I used to be a regular at Cambridge, but I hope I can resume that soon. तो हम्म, गौतम आज का टॉपिक इज अबाउट डिजिटल digital what we will ask everything about digital. So let me start with something very basic, right? What is digital? ये इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। मैनी पीपल बिना ये पूछे हुए कि व्हाट इज़ डिजिटल उसमें आगे बढ़ जाते हैं कि वी आर डूइंग अ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और वी आर रनिंग अ डिजिटल स्ट्रैटेजी एंड मल्टीपल सच थिंग्स विच इंक्लूड डिजिटल को एक प्रीफिक्स लगा के चला देते हैं। Mm-hmm. वैसे तो मैंने भी ये किया हुआ है। मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल आज जाके देखेंगे Mm-hmm. तो उसमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइज़र भी लिखा हुआ है, मैंने भी। Mm-hmm. तो इसलिए मेरे लिए ये आंसर करना बड़ा इम्पोर्टेंट है कि व्हाट इज़ डिजिटल। बट उसको आंसर करने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा अपने इंडस्ट्री में। इट्स ऑलवेज गुड समटाइम्स टू लुक फार फार बिहाइंड। आप इसको एबेकस के ज़माने से देखिए, या एबेकस जो कंप्यूटर सिस्टम्स बने थे उस ज़माने से देखिए। In my belief, all of those were little transitions towards this sort of digital age, basically, from an analog way of working towards this digital way of working. जिसमें what has been going on is that we are evolving slowly to move a lot of the stuff that we were doing, let's say manually or mechanically, into a automated way of doing things. Or what we are doing is we are digitizing paper based processes, basically. So this journey starts from there. And now, if you look at the context of today's 21st century world, in this context, digital has become so far advanced, basically with the advancement of technology, that it is almost synonymous to our lives itself. हमारे हाथ में फ़ोन है, ये भी एक डिजिटल प्रोडक्ट है बेसिकली हमारे हाथ में, जिसमें खुद बहुत सारे डिजिटाइज सॉफ्टवेयर वगैरह लगे हुए हैं, Mm-hmm. हार्डवेयर भी है। तो इट्स टू कॉम्प्लेक्स टू एक्चुअली आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट इज़ डिजिटल। हम इसको एक यहाँ पर जो कैम्ब्रिज में बैठे हैं, तो यहाँ पे एक बिजनेस स्कूल है, वहाँ पे एक प्रोफेसर हैं जिन्होंने इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा पेपर लिखा था, बाय द वे। Mm-hmm. और उन्होंने उसको बिल्कुल बिट स्ट्रीम लेवल पे ले जाके एक्सप्लेन किया, और जो 0 और 1 बाइट जो फ्लो करता है ना Mm-hmm. कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर, उस लेवल पे जाके डिजिटल को उन्होंने डिफाइन कर दिया। लेकिन आप किसी मार्केटिंग के प्रोफेसर से पूछेंगे तो वो उसको किसी और लेवल और लेंस से जाके जोड़ देंगे। तो ये बहुत ही, इट्स नॉट ईजी टू आंसर बाय द वे व्हाट Mm-hmm. इज़ डिजिटल। Mm-hmm. क्योंकि फिर थोड़ी सी थियोरेटिकल भी चली जाएगी कॉन्वर्सेशन, Mm-hmm. और थोड़ी सी प्रैक्टिकल भी चली जाएगी कॉन्वर्सेशन। तो तो मुश्किल है तो जवाब कुछ कर। आंसर मुझे मिला नहीं इस क्वेश्चन का आफ्टर 3 minutes of conversation. But okay, let me put a twist to this question. Is it a noun or is it an adjective जो किसी भी चीज के ये साथ यूज ये कर? ये वही है जिसमें अब डिजिटल अब प्रीफिक्स से दूसरी तरफ चला गया। हम्म. बीइंग डिजिटल, हम्म. डूइंग डिजिटल, हम्म. आई एम डिजिटल, माय फोन इज डिजिटल पे चला गया, रादर देन जो डिजिटल पहले पीछे लगा देते थे हम हम्म. प्रीफिक्स की तरह। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल स्ट्रेटजी, हम्म. डिजिटल एरा, डिजिटल एज, हम्म. ये सब अब ये उस तरफ चला गया है। तो फिर वहाँ पे वो एडजेक्टिव बन जाता है, बेसिकली ये कुछ हो रहा है। हम्म. बेस बट अगर मैं अपने इंडस्ट्री एक्सपीरियंस से बोलूँ, हम्म. तो आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ एक रिटेलर का, जिस रिटेलर के साथ हम काम कर रहे थे हम्म. बेसिकली। और वो स्टोर्स में कपड़े बेचते हैं हम्म. बेसिकली। मैं एक्चुअली उनका नाम भी ले सकता हूँ क्योंकि हम्म. काफ़ी साल पहले उनके साथ ट्रांसफॉर्मेशन किया था। एक बड़ा ही पॉपुलर नेम है, मार्क्स एंड स्पेंसर। आई थिंक इंडिया में भी सभी जानते होंगे वो. इंडिया में भी है, बिल्कुल। एक हाई स्ट्रीट ब्रांड है यहाँ पर हम्म. इंडिया में। थोड़ा सा
प्रीमियम ब्रांड की तरह वो पोजीशन कर देते हैं, बट एक्चुअली यहाँ पर वो एक हाई स्ट्रीट ब्रांड है, बट स्टिल इट्स हाई एंड ब्रांड इवन इन द हाई स्ट्रीट। हम्म उनके पास बहुत सारे स्टोर थे, 600-700 स्टोर थे उस टाइम, और अच्छी ट्रेडिंग चल रही थी। हम्म बट देन लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर करना शुरू कर दिया। हम्म तो उस टाइम जो उनका जो बीइंग डिजिटल था, इट वाज एक्चुअली टू मूव देयर सेल्स ऑनलाइन, कि ये जो कपड़े हम्म हैं ये अवेलेबल हो जाए कस्टमर्स के लिए ऑनलाइन। हम्म हाउएवर इसके पीछे इतने लंबे प्रोसेसेस हैं, क्योंकि अगर आपने ऑनलाइन कर दिया तो आपके कपड़े कहाँ स्टॉक होंगे? किसी वेयर हाउस में होंगे, क्योंकि स्टोर्स में जब बेचते थे तो बड़ा सिंपल था कि एक प्रेडिक्शन लगाते थे और वो स्टोर्स में कपड़े भेजते थे। बट ऑनलाइन के लिए उनको अलग वेयर हाउस बनाना पड़ा, जो काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है। यहाँ पर यूके में बहुत दूर, समझिए किसी गांव के इलाके में, उनका बड़ा सा वेयर हाउस है जहाँ से वो ऑनलाइन की फुलफिलमेंट करते हैं हम्म अपने प्रोडक्ट्स की। तो उनका जो डिजिटल जर्नी था या बीइंग डिजिटल जर्नी, वो वहाँ से स्टार्ट हुआ, बस टू मूविंग ऑनलाइन। जब हम करते गए वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, एक प्रोडक्ट आ गया मार्केट में जो बहुत बिका, आप भी जानते होंगे। उस प्रोडक्ट का नाम है आईपैड हाँ या टैबलेट। हम्म सबको लगा कि हम तो सारे लोग तो कपड़े एक लैपटॉप पे ऐसे टाइप वाइप करके खरीदेंगे। हम्म बट अचानक से 2 साल चल रहा था वो हम्म प्रोजेक्ट, आईपैड आ गया बेसिकली। हम्म और अब उन्होंने ये चेक किया कि बहुत सारे लोग आईपैड पे देख देख के हम्म ऑर्डर कर रहे हैं, हम्म और जो हमने नई उनकी वेबसाइट बनाई थी वो उस पर चल नहीं रही थी। हम्म तो 2-3 महीने फिर लगे उसको आईपैड के लिए रेडी करने के लिए, हम्म उस पे भी अच्छे से चले और उस पे भी लोग खरीद सके। तो यही ऐसे डिजिटल जर्नी प्रोग्रेस होते जाती है। हम्म इसके बाद एक और प्रॉब्लम आ गई कि कपड़े तो खूब वेयर हाउस से बिक रहे हैं, बट स्टोर में स्टॉक पड़ा हुआ है। हम्म तो स्टोर का स्टॉक हम कैसे बेच सकें हम्म अपने कस्टमर्स को? तो ये भी डिजिटल जर्नी का ही पार्ट है मेरे हिसाब से, कि उसको आप कैसे फिर स्टोर से इंटीग्रेट करके निकालें। मगर क्या ये एक ही डिजिटल प्रोडक्ट है, प्रोग्राम है, या ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिजिटल है दैट यू आर स्टिचिंग टुगेदर? यस, एग्जैक्टली, एक अम्ब्रेला है, इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं इसके। जैसे मैंने कहा, आपके अगर आप थियोरेटिकल लेवल पे देखो तो बिट स्ट्रीम है बस, हम्म कि सब कुछ 0-1 हो गया हम्म एक तरह से। लेकिन अगर आप एक कस्टमर के पर्सपेक्टिव से देखो, एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखो, सो हम्म देन it is far far complicated and complex for them, and एग्री। that is why they need people like me or you हम्म who can help them basically on their journey. दैट रिमाइंड्स मी कि जैसे यू आर सेइंग अबाउट दिस दिस ओवरआर्चिंग सॉर्ट ऑफ अम्ब्रेला, जो कि एक डिजिटल प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल इनिशिएटिव्स होते हैं which kind of work hand in hand. Magar, I think before this umbrella is there, there is again a strategy aspect of digital, which is, I guess, digital strategy. What's that? I mean, why do you need it if you have one, or how do you make sure that, like in your case, you must have started with some digital strategy and technological improvements where there was something that disrupted the market, and in turn you have to be reactive within your existing program to cater to that disruption. So what's all that about? वो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली निमेश। ये आपकी डिजिटल स्ट्रैटेजी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पहले जानना। जैसे आपको मैंने पिछला ही एग्जांपल दिया उस रिटेलर का, मार्क्स एंड स्पेंसर का। उनकी स्ट्रैटेजी शुरू में तो बड़ी सिंपल थी कि हमें ऑनलाइन बेचना है, क्योंकि हमारे सारे कस्टमर वहाँ जा रहे हैं। नहीं तो वो जो दूसरे रिटेलर हैं जिनके ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, वहाँ से वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, क्योंकि उनको कन्वीनियंस मिल रहा है, घर में बैठे बैठे उनका उनके कपड़े आ रहे हैं बेसिकली। हम्म तो हमें वो करना है। तो उनका बहुत सिंपल सा वन लाइन स्ट्रैटेजी था जिसका नाम था मल्टी चैनल फाउंडेशन, कि हमें एक मल्टी चैनल बनाना, नहीं तो हमारी बिजनेस ही चली जाएगी, हम्म बेसिकली मार्केट शेयर हमारी चली जाएगी। तो इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। सो उनका डिजिटल स्ट्रैटेजी था टू बिकम डिजिटल, वो जो आपने कहा ना कि द एन एडजेक्टिव हम्म basically. But then when you do this, then you realize that there are a lot of foundational elements that are needed.
Mm-hmm. And that is why you will see a lot of digital programs are actually run by technology people, because there is a lot of complex underlying technology that needs to be orchestrated Mm-hmm. to enable businesses to become digital. In so unki strategy thi to okay, allow customers to, let's say, shop online, but like I gave in the examples, that you need to integrate with the warehouse, you need to automate the warehouse, because if customers want their clothes tomorrow, right, and your warehouse is not equipped Mm-hmm. to ship the clothes the next day, Mm-hmm. then what's the point of just selling online? Because the next retailer is going to do that, Yeah. is going to have the ability to deliver next day. And these things are part of the strategy, basically, that Mm-hmm. how are you going to achieve market share, or increase your revenue, or find efficiencies in the process Mm-hmm. where I can reduce my cost, basically, because and that is driven by the business. So that part of the digital strategy is a business run, business of drivers, Mm-hmm. uh, based approach. Mm-hmm. And then there's another underlying foundational part of the strategy, which is sort of technology architecture based approach that needs to be taken to enable that business goals. And then there Nothing. is the struggle where you try to synchronize both these approaches to bring about a required outcome. Talking like the business person. Well, I think we have seen it so many times that जब चीज़ें smoothly हो रही होती हैं तो normally you get a hunch something is not right, someone is not getting the true picture. But anyways, kind of moving on, the other thing I keep hearing, digital marketing. अभी हमने तो strategy कर ली, technology कर ली. What is this beast? So again, for this you have to go back to the basics, that what is marketing. And by the way, what is marketing is such a big debate which every 5 years keeps coming Hmm. from people who have. I today only I was talking to some very very senior professors Hmm. who were discussing about Philip Kotler and Hmm. his opinions, Hmm. basically, because he's able to publish stuff that which is his own point of view, and people just sometimes read it as gospel, basically. Hmm. So if you start from that part of marketing, and it's that itself probably needs a separate discussion, basically, which is part of my Hmm. research on customer experience. Hmm. But to try to make it very very simple, Hmm. basically, key, you have a, and I'll take the product example because that makes it sometimes easy, the 4 P's wala stuff, basically, Hmm. of marketing, product, price, promotion, Hmm. the old school stuff. Hmm. However, because of this new sort of digital world, the internet age, Hmm. all of these things now need to are driven, or people's journeys to understanding a product, to understanding its price, to understand what's available, basically, as to how a company is going to market its products, Hmm. is now available on that internet, in the internet, Hmm. rather than मैं कहीं घूम रहा हूँ और मैं किसी शॉप में देख रहा हूँ किसी का ब्रांड, वो भी Hmm. है, वो ऑफलाइन, वो तो है ही. Hmm. So that part of the marketing is basically digital marketing, Hmm. which is how do I make sure my products are available there. That is one simple thing on the internet. Hmm. The second thing is, of course, now I want people on the advertising side of marketing, basically, that how do I have reach, basically, which is where two big companies in the world, Google and Facebook, Hmm. Hmm. are actually advertising companies. In reality, they are not technology companies. In reality, they are advertising companies. Hmm. People are Companies are reliant on these two companies becoming the platform through which they can market their products or services, Hmm. uh, basically. And people are using that, and how to apply some strategies and approaches in that space, because of the complexities that Google and Facebook have built, because they have all the customer data in a way, or behavioral data as of now. So how companies can work with that is part of digital marketing. So any digital marketer is always thinking about this, Hmm. basically. They're always thinking, how do I get my presence there, so that I can get customers onto that so called funnel, Hmm. basically. और ये मैंने आपको बहुत ही सिंपलिस्टिक पर्सपेक्टिव दे दिया है एक कंज्यूमर या रिटेल बेस्ड जर्नी से. ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है अगर आप इसको किसी और बी टू बी के वर्ल्ड में देखेंगे, या Hmm. सर्विसेज के
वर्ल्ड में देखेंगे, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट पुटिंग पीपल ऑन सम एसईओ ट्रेल Mm-hmm. if you're trying to sell a service, for Mm. example. That in the same traditional way, there is a way, but those are different marketing strategies that need to apply. I guess ये जो perspective है from the businesses side, I think it's very interesting. Uh, but like you said, it was very high level. Uh, I think इसके लिए तो पूरा एक episode एक पूरा लगेगा. एपिसोड लगेगा, क्योंकि इसके ऊपर मेरे बहुत ही ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। Mm, और मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू एक स्कूल ऑफ थॉट से अलाइन करता है, जहाँ पर अभी क्या है, मार्केटिंग वो सारे ऐड फेंक देते हैं। mm, मच वो हम वो मजाक करते हैं ना कि जाल डाल दो मछली आ जाएगी, mm, 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 राइट? मछली बीइंग द कस्टमर और मार्केटिंग बीइंग द जाल डाल दो, mm, बेसिकली। रादर देन ये सोचना कि मछली को एक्चुअली क्या चाहिए, mm, तो आपको जाल डालने की ज़रूरत नहीं है, mm, बेसिकली। और वो मछली को जो चाहिए वो आप उसको दीजिए, mm, बेसिकली। तो mm, कस्टमर के नीड्स से स्टार्ट करिए, mm, तो वहाँ पे फिर आपकी मार्केटिंग और मार्केटिंग स्पेंड सब कुछ आसान हो जाएगी। तो वहाँ से स्ट्रैटेजी शुरू करिए, फिर डिजिटल आएगा। mm. लेकिन अगेन उस पे तो बहुत I think I think all those aspects of personalizations और कैसे targeting marketing होती है, I think we will talk about that. Let me just spin this question from somebody like me. Okay, I am into industry for a few years. I see, I let's say I'm a Java developer, maybe SAP, ABAP, or whatever SAP is doing these days, and I hear all about this digital thing going on, this revolution everyone's being part of, and because they are in this digital space, they are also moving technologies much faster. They are literally on the forefront of change as it happens, and as organizations are to create that, uh, you know, unfair advantage within the market, deploying these techs fast. I feel missed out on this opportunity. So अब मैं क्या करूं? क्या मैं डिजिटल मार्केटिंग में चला जाऊं? क्या मैं डिजिटल स्ट्रैटेजी बनाने लगूं? या मैं कोई टेक डेवलपर बन मैं क्या करूं? How do I get some value out of today's conversation to think about what is it that I can do about this revolution and how I can be part of it? डेफिनेटली, बिकॉज our podcast is actually called Tech Mindset. Hmm. So I'll bring it back to the mindset, basically. Okay. First of all, it is about having the right mindset to learn. Because if you're curious about this, uh, and you try to learn about this topic, that is one of the most important things first. Mm-hmm. Secondly, in your day to day work, what you're doing, how does it align with this sort of a narrative around digital, needs to be known. So, for example, you said I am some Java microservices developer. All the big people in my organization are talking about, I don't know, that we are running this big digital transformation for this bank, and I'm just writing a microservice somewhere. Mm-hmm. Let's say I'm writing a microservice to for payments. Mm-hmm. Let's say, yeah, that I'm just writing a service to pull some of the payment providers who are there, PayPal, etc., whoever. Basically, so what's relevant for me, basically. But the most important thing to understand actually is that how does uh, the business objective connect to your the payment service that you're actually building. If you understand that and are able to have the conversation with your peers and with your business people to say how your work is going to impact, that is very very important to actually understand. And that's why the mindset shift is needed, from thinking of ourselves as just some techie in some corner to actually thinking of somebody who's actually making impact to a business. Once that happens, automatically the digital shift will happen. Again, to use the digital prefix here. Okay, over exploitation of the word digital. But I guess गौतम, जो आप कह रहे हो उसका मतलब ये है कि गो बियॉन्ड द टेक, कहानी समझो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि Hmm. वो कहानी समझना, उस जो वैल्यू क्रिएशन हो रही है उसको समझना is gonna bring that shift in mindset, that you're not overly just thinking about doing that API or that web service.
you are going beyond that, because जब आप उसके beyond जाओगे, that is when you actually start providing more value. अरे आपको ये भी करना है, why are you, let's say, splitting it in two phases? Why not combine it? Because now you understand what the total journey is going to be like. बिल्कुल, एंड आई कैन गिव यू एन एग्जांपल अगेन फ्रॉम द सेम प्रोजेक्ट, Mm-hmm. राइट? Initially, I got a work to actually I did a lot of stuff there, but one of the examples over there is uh, what are we going to migrate in terms of data? Mm-hmm. कि हम किसी पुराने सिस्टम में थे, हमको नए सिस्टम में जाना है जहाँ पे चैनल्स ओपन होंगे, ऑनलाइन जाएंगे। तो व्हाट शुड वी माइग्रेट, वी नीड टू नो द स्कोप। Mm-hmm. ये टेक्निकल टीम्स से बहुत बार वो आ रहा था Mm-hmm. रिक्वेस्ट, Mm-hmm. बेसिकली। और जो बिजनेस के टीम्स थे वो बड़े वरीड थे कि हमारा डेटा मिस ना हो जाए, कुछ ये ना हो जाए बेसिकली। Mm-hmm. तो मुझे ये काम दिया गया था कि जाओ पता करो कि डेटा माइग्रेशन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। बड़ा वर्ड डाल दिया था, बट असल में देखा जाए तो ये जानना था कि उस कि बिजनेस को क्या चाहिए एक्चुअली Mm-hmm. नेक्स्ट सिस्टम में। कि क्या क्या मुझे अपने कस्टमर्स के पिछले 5 साल के ऑर्डर चाहिए, Mm-hmm. क्या मेरे कस्टमर के पिछले 6 एड्रेस चाहिए जहाँ वो रह रहे थे, क्योंकि ये Mm-hmm. सारे एड्रेस थे उनके पास। Mm-hmm. क्या मुझे मेरे कस्टमर का पिछले सिस्टम का पासवर्ड चाहिए। Mm-hmm. वो बाद में पता चला कि पासवर्ड आप माइग्रेट कर ही नहीं सकते हो, बिकॉज सिक्योरिटी इश्यूज है, वो देंगे नहीं जो पिछले सिस्टम वाले थे Of course. बेसिकली। Mm-hmm. सो बट जब मैंने इस कॉन्वर्सेशन को बदला फ्रॉम जस्ट अंडरस्टैंडिंग की स्कोप ऑफ एट्रीब्यूट्स, क्योंकि लोग एट्रीब्यूट लेवल पे जाए जा रहे थे, Mm-hmm. इसको रादर बिजनेस के पर्सपेक्टिव से जब समझा Mm-hmm. कि हर इंडिविजुअल बिजनेस ओनर से जाके बात करी और उनकी प्रायोरिटी समझी बेसिकली, तो फिर ये बहुत आसानी से रिजॉल्व हो गया कि एक्चुअली में क्या डेटा माइग्रेशन होनी चाहिए। Mm-hmm. और बैलेंस आउट हो गया बिटवीन द टेक्नोलॉजी पीपल और जो बिजनेस पीपल Mm-hmm. के जो कंसर्न्स थे। और टेक्निकल लोगों के तो यही कंसर्न थे कि हमें तो बस बता दो कौन सा एट्रीब्यूट और उसमें क्या डेटा क्वालिटी चाहिए, उन्हें बस ये चाहिए था। Mm-hmm. लेकिन वो ये नहीं जानना चाहते थे बिजनेस से कि एक्चुअली में ये क्यों करना है, Mm-hmm. कोई ये उनसे पूछ नहीं रहा था। तो Okay. और अगर मैं एक मैनेजर हूँ जो अपने डेवलपर लाइफ के आगे आ चुका हूँ, एंड आई स्टिल समहाउ वांट टू गो एट दैट एज जहाँ पे कुछ नया हो रहा है, कुछ नई एनेबलमेंट्स हो रही हैं, कोई कैपेबिलिटीज़ डेवलप हो रही हैं जो ट्रेडिशनल आईटी के लेट्स से हिस्से में आती नहीं थी पहले। तो मैं मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं? अ, बहुत सारे ऑप्शन हैं एक्चुअली आपके पास बेसिकली, हम्म। बिकॉज एक स्पेशली बिकॉज अगेन ये टेक्नोलॉजी के बारे में, तो आई एम अज्यूमिंग दिस इज मैनेजर हु इज इन द टेक्निकल स्फीयर हम्म। basically. या। So all those managers who say that I don't understand technology हम्म। or I don't understand digital, I am just a manager. हम्म। For them, I would say give this message that sorry, you are part of a technology team. हम्म। So you need to have an understanding of technology, even if maybe in your role you're not going to write the code or push the deployment, etc. हम्म। But an understanding of technology is the most important thing to gain respect of not just your business partners or customers or clients हम्म। or product people, but also gain respect of your team, that why will they back you. हम्म। And such managers are much much more successful. So adopt the new word. For example, in multiple projects I have seen managers unwilling to move towards, let's say, working in an agile way. हम्म। अब तो ये बड़ा कॉमन हो गया है, बट नाउ समटाइम्स आई सी मैनेजर्स बीइंग फिक्सेटेड बिकॉज ऑफ द एजाइल प्रोसेस, हम्म। कि वो एजाइल के पुलिस बन जाते हैं हम्म। कि यही डिजिटल, हम तो डिजिटल वाले मैनेजर हैं हम्म। हम एजाइल के पुलिस बस बन जाएंगे कि ये ऐसे चलना चाहिए, रादर देन वो डिलीवरी भूल जाते हैं। हम्म। सो व्हाट आई वुड recommend is, again, be very goal oriented, align your goals with the business goals basically, हम्म। and make sure that you understand technology and the digital space very very well, what's coming up, what's going on.
watch this podcast. mm, क्या क्या आ रहा है, mm, in the future you will be able to learn, mm. basically, to learn, develop and grow. That's what I can say. ब्रिलियंट ब्रिलियंट माय टू सेंट्स आर आज का पॉडकास्ट जैसे डिजिटल वर्ल्ड में इट वाज अ हेलीकॉप्टर व्यू ओके एंड realistically all these dots that we touched upon are episode or series of episodes in their own right. Yeah. आज का पॉडकास्ट हमको अभी ख़त्म करना पड़ेगा विद द प्रॉमिस दैट वी विल एक्चुअली डू अ डीप डाइव ऑन pretty much all of these and the human aspect of these technologies, people trying to grow in their careers, moving on site. What is it that you can do to kind of achieve what you are out to achieve in industry? uh, with that note, thank you very much, Gautam, for Thank you. giving your time and such fantastic high level overview of what digital is all about. Uh, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें एंड कमेंट्स भी छोड़ें. कमेंट्स हमको बताएंगे कि आपको क्या देखना है, व्हाट इज़ इट दैट यू आर मोर इंटरेस्टेड इन, व्हाट डू वी नीड टू फोकस मोर ऑन दीज पॉडकास्ट गोइंग फॉरवर्ड एंड yeah, we will see you very soon. Thank you very Thank much. you.